Jai Hind, Vande Mataram friends. In part 1 in quadratic equation, I explained you what is the meaning and definition of quadratic equation and to identify whether the equation is quadratic or not. That much I explained you from introduction part, and after that 4.1 part 1. Now 4.1 part 2 and 4.2 we are going to start today. Okay, in 4.1 part 2, how to make the equation that is taught to you. So here I am going to explain you how to make the equation. Okay, there are total 4 sums, and out of that I am going to explain you 2, and another 2 you have to do your own. Okay, see the first one. It is saying that the area of rectangular plot is 528. See, rectangular plot means with length and breadth are different. Property of rectangle you should know. All sides are 90 degree, opposite angles are equal, and opposite sides are equal. This is rectangle. This is called length and this is called breadth. Okay, its area. Okay, that is length into breadth equal to, it is saying that it is 5 to 8 meter square. Okay, and further information is that the length of the plot is 1 more than the twice of its breadth. Whatever breadth is there, length is 1 more twice of it. So assume that breadth is your x. So what is the twice of x? That is 2x. And length is 1 more than that. So 2x plus 1. What is formula? Length into breadth equal to area. So what is length? Just now you written. You assume 2x plus 1. And what is breadth? That is x. Equal to 528 meter square. This is the way to interpretation. इसको interpret करना बोलते हैं. Once you know the interpretation, then you will write that sum in the form of statement, and then you have to solve. Now see how to write in the form of statement. This is the interpretation. So you will write like this way. Suppose the length of rectangle be x. Suppose, no, we are assuming breadth, no? Suppose the breadth of rectangle be x meter. Therefore, its length equal to 2x plus 1 meter. As per given condition. What is your condition? Length into breadth equal to area of rectangle. Okay, length into breadth equal to area of rectangle. What is length? 2x plus 1. What is breadth?
x equal to 528. X is multiplied by 2x, 2x square. X is multiplied by 1, x 1 x equal to 528. Shuffle it in that side, so you will get 2x square plus x minus 5 to add, and like this way you can make the equation. This is your equation. Is it clear? Understood or not? See one more sum. एक और सम देखते हैं. See the fourth sum children, last one. ये बोल रहा है a train travels a distance of 480 kilometer at a uniform speed. You know very well the meaning of uniform speed. In specific distance covered in specific time. Suppose in first 10 minutes 100 kilometer is covered, then another 10 minutes again 100 kilometer is covered. That is called the uniform motion that you studied in 9th standard in science. Okay, so again I am reading the sum. It is saying that a train travels at distance of 480 kilometer at a uniform speed. If the speed had been 8 km per hour less, means if we reduce the speed of the train 8 km per hour, then it would have taken 3 hours more to cover the same distance, means to cover the 480 km. Suppose earlier it was covering 5 hours, now it is taking 8 hours. मीन्स 3 घंटे और ज़्यादा ले रही है. आई एम गिविंग दिस एग्जाम्पल. कवर द सेम डिस्टेंस. वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन. ओके, वी हैव टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन. यू नो वेरी वेल चिल्ड्रन, दिस काइंड ऑफ सम फॉर्मूला इज देयर. टाइम इक्वल टू distance upon speed. To solve this kind of sum, you should know this formula: time equal to distance upon speed. Is it clear? So first of all, let's assume that speed of the train is x kilometer per hour. Suppose the speed of train is x kilometer per hour. Therefore, time t1. So what is time t1? That is distance upon speed. What is distance mentioned here? It is 480 kilometers. So 480. And what is the speed? Speed is x. After reducing the speed by 8 kilometer per hour, new time, that is t2, equal to, now distance will be constant, it will not change. अब आप यहाँ से कंजरी जाओ, कंजरी का डिस्टेंस हालोल चौकड़ी यानी अपने हनुमान जी के मंदिर से कंजरी का डिस्टेंस मैक्सिमम 2 किलोमीटर है.
उससे ज़्यादा नहीं है, मैक्सिमम 2 किलोमीटर। अब आप साइकिल से जाओ तो भी वो 2 किलोमीटर रहेगा, आपको शायद आधा घंटा लग जाए। आप बाइक से जाओ तो भी वो 2 किलोमीटर रहेगा, शायद आपको 10 मिनट लग जाए। और आप चल के जाओ तो भी उसका डिस्टेंस 2 किलोमीटर ही रहेगा, चाहे आप 1 घंटे में पहुंचो। इज इट क्लियर? सो डिस्टेंस विल नॉट चेंज, इट इज ऑलवेज कांस्टेंट। सो इट इज t2 इक्वल टू 480 अपॉन, स्पीड आप रिड्यूस कर रहे हो तो पहले की स्पीड x थी, यू रिड्यूस द स्पीड -8 as per given condition। अब क्या कंडीशन बोली है उसने? इफ द स्पीड had been 8 kilometer per hour has reduced less, then it would have taken 3 hour more, 3 घंटे और ज़्यादा लगते हैं। इज इट क्लियर? सो t2 इक्वल टू t1 प्लस 3, जितना भी पहले टाइम लगता था उसमें 3 घंटे ज़्यादा लग रहे हैं। तो व्हाट इज t2? 480 अपॉन x माइनस 8 इक्वल टू 480 अपॉन x प्लस 3। अंडरस्टूड और नॉट? समझ में आया कि नहीं आया? देख लो जरा इसको ढंग से समझ लो, बिकॉज अब मेरे पास जगह नहीं है, सो आई हैव टू रब इट, सो सी इट प्रॉपरली। Now see here, 480 upon x minus 8. Now this one you shuffle in that side, so it become minus 480 upon x equal to 3। ये हम इधर ही रखते हैं एज यूजुअल, इसमें कोई ज़्यादा पंगा करते अभी नहीं है। Take LCM here, so it become x minus 8 and x। आपकी लैंग्वेज में क्रॉस मल्टीप्लाई वी विल डू 480x minus 480 and in bracket x minus 8 equal to 3। Okay, open the bracket, 480 x minus 480x, when you multiply this 480 by this, so it will become 480x minus into minus plus, now multiply 480 by 8, okay, so this is the multiplication, 3840 upon, here also you multiply, so it becomes x square minus 8x equal to 3. Now you can see this both are plus and minus, so it will be the same term, so it will be cancelled here only. This one you shuffle in this side, so 3840 equal to 3 and in bracket x square minus 8x. 3840 equal to 3x square minus 24x. Now this one you shuffle in this side, so it becomes 3x square minus 24x minus 3840
इक्वल टू 0। आप बोलोगे सर इसको इधर क्यों नहीं ले जाने में तकलीफ नहीं है, फिर ये माइनस में होगा, फिर इसके लिए प्रोसीजर करना पड़ेगा, इट्स बेटर इसको इधर लेके जाओ। नाउ यू कैन सी 3 4 plus 2 6, that is also divisible by 3. If you check this one, 8 plus 4 12, 12 plus 3 15 and 5 plus 1 6, means the addition of this number is 6 and 6 is also divisible by 3. So in that condition this entire equation will divide by 3. And you will get here x square minus 8x minus, now see 3 1s are 3, 3 2s are 6, 3 8s are 24. So your equation is x square minus 8x minus 1280 equal to 0. This is the way to solve the equation, to find the equation. Now I am going to explain you how to solve the equation by factorization method. Okay, and that is your 4.2 का फर्स्ट का मैं आप लोगों को सबसे पहले थर्ड सम ही बताता हूँ, बिकॉज वो रूट में है तो आप लोगों के लिए थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा. सो लेट्स टॉक अबाउट 4.2 का फर्स्ट सम. ओके, जरा इसको देख लीजिए एक बार. Now see children, in 4.2 see the third sum. This is under root 2x square plus 7x plus 5 root 2 equal to 0. Now you know very well, whenever we saw the polynomial, quadratic polynomial or quadratic equation, so first to factorize it we multiply first term and last term. So if 5 root 2 is multiply root 2, so 5 into 2 into 2 4, 4 का square root 2, 5 2s are 10. What you will get? 10. Now you multiply 10 such a way, if you multiply 10, okay, if you get your answer should 10 and your addition should come 7. Okay, so 5 2s are 10 and 5 plus 2 7. Is it clear? Now see, root 2x square plus 2x plus 5x. 5 2s are 10, 5 plus 2 7 plus 5 root 2. Now children, if you see here, 2 is also not common and root 2 is also not common. If you will take here only x, तो यहाँ पे बात नहीं बनेगी, बिकॉज मैं आपको इधर का नमूना दे रहा हूँ, सो यू विल गेट द आइडिया ऑफ दैट साइड. सपोज आपने यहाँ पर जो है 5 कॉमन लिया, तो ब्रैकेट के अंदर x प्लस रूट 2 ये आना चाहिए. इसका मतलब यहाँ पर भी जो है ब्रैकेट पे क्या आना चाहिए? x प्लस रूट 2. इज इट क्लियर और नॉट? अब यहाँ पे अगर ये आ रहा है तो डेफिनेटली ये रूट 2 में कैसे जाएगा? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि नहीं है? देखो अब यहाँ पे हम जो भी नंबर बाहर लेते हैं, वॉट एवर नंबर वी टेक इन आउटसाइड. हाँ, तो चिल्ड्रन वी वर टॉकिंग अबाउट, हमको यहाँ पर भी रूट 2 लाना पड़ेगा. अब सपोज मैं यहाँ पे 2 कॉमन लेता हूँ. ओके, अब देखना बराबर से. दिस इज सॉरी मैं यहाँ पे सपोज रूट 2 कॉमन लेता हूँ. अब बराबर देखना. सो सी हियर रूट 2x स्क्वायर कॉमन का मतलब ये होता है कि इस टर्म को डिवाइड कर रहे हैं. सो डिवाइडेड बाय रूट 2
and x is also there, so I am writing here x root 2x. तो इसका मतलब देखो जरा क्या होगा, रूट 2 इंटू x अपॉन रूट 2 इंटू एक्स। ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, तो ये x बचा, ये तो यहाँ पे आ गया। यहाँ पे कैसे रूट 2 आया, दैट इज द क्वेश्चन। नाउ सी दिस, मैंने इसीलिए इसको चूज किया था कि आपको ये बताना। अब अगेन दिस रूट 2 मीन्स दिस 2x, this is divided by this root 2x, yes or no? Now this x and x has cancelled, बचा क्या, 2 upon root 2। अब तुम लोगों को मालूम है अच्छी तरह से, डिनोमिनेटर में कभी भी रूट नंबर नहीं आता है, इसको रैशनलाइज करते हैं। ये सब हमने 9th में फर्स्ट चैप्टर में किया है। ओके, सो ऊपर क्या आ गया, 2 रूट 2, और नीचे क्या आ गया, रूट 2 इंटू रूट 2, सो 2 कैंसिल, व्हाट इज रिमेन, रूट 2, एंड दैट्स व्हाई रूट 2 हैज कम हियर। इज इट क्लियर? ये x प्लस रूट 2 यहाँ पे आप लोगों को, ये तो अपने को समझ में आया, लेकिन ये इट हैज कम, सो इन वन ब्रैकेट नाउ इट विल कम x प्लस रूट 2, and in another bracket it will come root 2x plus 5 equal to 0, here root 2x and this one plus 5। अब आगे का प्रोसीजर तुम लोगों को मालूम है, that I am not going to tell you। x plus 2 equal to 0, root 2 plus 5 equal to 0, x equal to minus root 2 and x equal to minus 5 upon root 2, therefore solution root 2 minus root 2 comma minus 5 upon root 2, that you have to do। ये आप लोग खुद से करना। देखो एक बार चेक कर लो इसको जरा, कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। सेम वे सी द फोर्थ सम, ये चौथा सम हम लोग देखते हैं। ओके, now see, here complication is there, this last one is in fraction, so first make it in the normal term, take LCM 8। okay, if 8 you divide by 1 you will get 8, 8 2s are 16x square, 8 divided by 1 then 8 minus 8x, 8 divided by 8, 1, 1 ones are 1 equal to 0। okay, if you do cross multiply you will get 16x square minus 8x plus 1 equal to 0। अब इसकी पैटर्न को जरा ध्यान से देखो, 16x स्क्वायर का परफेक्ट स्क्वायर है, 4x आएगा इसका स्क्वायर रूट, 1 का स्क्वायर रूट 1 आएगा, मिडल टर्म जो है 2 इंटू ए इंटू बी होता है ना, तो 2 इंटू 4x इंटू 1 8x आ रहा है, और देखो ये माइनस है ये प्लस है, यानी कि ये जो पैटर्न है ये किस पैटर्न में आ रही है, a माइनस बी के होल स्क्वायर में, यानी ए स्क्वायर minus 2ab plus b square, ये याद है ना। So here we can write 4x का whole square plus 1 का whole square and middle term is 2 into 4x into 1। इसका मतलब 4x minus 1 का whole square, if you will expand this you will get this। बराबर, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म, ये मत पूछना मिडिल टर्म किधर गया, इसका ये जो है फैक्टराइज फॉर्म। सो हियर 4x minus 1, 4x minus 1 equal to 0, 4x minus 1 equal to 0, or 4x minus 1 equal to 0, x equal to 1 upon 4, or x equal to 1 upon 4, therefore x equal to 1 upon 4। अरे यार क्यों करवा दिया मैंने इसको, तुम लोगों को खुद करना था, हो गया, चलो देख लो।
अंडरस्टूड? आई होप सो यू अंडरस्टूड दिस. कंप्लीटिंग दिस मच, बराबर. इसका जो पार्ट 2 है बच्चों, बराबर, देर आर टोटल 5 सम. 5 में से मैंने 2 कॉम्प्लिकेटेड सम तुम लोगों को करवाए हैं. 3 sums you have to do your own, and the second part means what? Problem sums जो आपको दिए हुए हैं 2 to 6, that we will do in next part. अगले पार्ट में वो हम लोग करेंगे. ओके, बाय, सी यू ऑल ऑफ यू.